So today I am going to teach you the chapter two stories about flying. The first half of the chapter is his first flight. So I'm going to explain you this first. So this story is written by Leanne O'Flaherty. The theme of the story, his first flight, is having courage and self-confidence. Courage means himmat and self-confidence means Atmavishwas. So basically the story is about a young bird that is afraid to fly for the first time. So ये जो पूरी स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है एक यंग बर्ड के बारे में जो डरती है फर्स्ट टाइम फ्लाई करने से. इवन दो उसके जो यंगर सिबलिंग्स मीन्स जो उसके कज़न्स हैं वो फियरलेसली विदाउट एनी फियर वो फ्लाई कर सकते हैं, बट उनके साथ वो नहीं जा पाता है क्योंकि उसे डर लगता है. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस फियर उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको एनकरेज करते हैं, बट फिर भी वो करेज गैदर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको उसके पेरेंट्स पनिश कर देते हैं टू स्टे हंगरी इफ़ ही डिड नॉट ट्राई. तो उसकी मॉम उसके लिए एक ट्रैप बिछाती हैं. ट्रैप मतलब एक जाल बिछाती हैं ऑफ फूड, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट होके वो फ्लाई करे और वो फूड पकड़े. सो द स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड दिस. सो इट इज़ an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. He believes that his wings would not support him. Despite his younger siblings fly fearlessly with much shorter wings, he could not gather the courage to the same. He was punished to stay hungry if he did not try. Thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. The lesson reflects how one hesitates to take first step, and that fear is all in the mind. One should trust one's ability because the fear of suffering is worse than the suffering itself. So ये जो पूरी स्टोरी है इसका थीम है to having courage and self confidence. So you must also have experienced this while taking the first step towards something. You will always get afraid while doing it. Same is with this bird as well. So the lesson reflects how one hesitates. कैसे हर इंसान हेजिटेट करता है अपना फर्स्ट स्टेप लेने से पहले, और वो पूरा उसका डर उसके माइंड में ही घूमता रहता है. सो इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस थीम एंड अ यंग बर्ड. सो लेट्स स्टार्ट with the context. So the first paragraph says the young seagull was alone on his ledge. Seagull is a bird that lives near the sea and has short legs, long wings and white and grey feathers. Was alone on his ledge. अब ledge क्या होता है? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or cliff. ledge एक cliff होता है. cliff पता है क्या होता है? एक सी के जहाँ पे सी होता है वहाँ पे बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं, उसको ledge बोलते हैं. His two brothers and his sister had already flown away the day before. Flown is the past participle of fly. तो जो उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो उड़ना सीख चुके होते हैं, और वो एक दिन पहले, डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, येस्टरडे ही वो सब लोग उड़कर वापस आते हैं. He had been afraid to fly with them. Just because he could not gather the courage, he was not able to fly. He was afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the edge. Brink मतलब क्या होता है?
लेज चट्टान होती है, चट्टान का जो कोना होता है, एक्सट्रीम एज होता है ऑफ द लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी, उसको हम ब्रिंक बोलते हैं। तो जो चट्टान का एज होता है, एक्सट्रीम कोना होता है, वो वहाँ तक तो एक रन लेकर उड़ते हुए आता है, पर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता फ्लाई करने के लिए। So the line says, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap, flap मतलब फड़फड़ाना, his wings, he became afraid, जैसे ही वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है वो डर जाता है और वो फ्लाई कर ही नहीं पाता। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। तो जो चट्टान होती है वो कहाँ होती है, वो सी में होती है। तो उसे ये बात पता थी कि अगर वो एक बार ट्राई करेगा तो उसको बहुत माइल्स का रन लेना पड़ेगा, क्योंकि चट्टान बहुत दूर दूर होती हैं और उनमें जो डिस्टेंस होता है बीच में वो बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट ही नहीं करते। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो वो अपना सर बेंट मतलब झुकाता था और वापस से भाग जाता था जिस होल में वो लोग रहते थे। वो चट्टान के नीचे जो होल बना हुआ था उसमें वो लोग रहते थे, वेयर दे स्लेप्ट एट नाइट, वहीं पे वो भाग जाता था। So the first paragraph in short says the story is about a young seagull who is at the stage of life where he has to learn to fly. Unlike his younger brothers and sister, he is too afraid to fly. When all of them went for flying for the first time near the edge of the sea, all of them except him succeeded. He could not trust his wings. He got terrified. Terrified means डर जाना, by the vast sea and got convinced that he could never fly. As a result, he was ashamed and disheartened. Ashamed मतलब शर्माना, शर्म से झुक जाना, and disheartened मतलब दुखी होना, and thus went inside the ledge where usually he slept. Coming to the next paragraph, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, तो उसके जो लिटिल सिस्टर और ब्रदर्स थे उनके जो विंग्स थे वो उससे छोटे थे। ran to the brink, flapped his wings and flew away। तो वो लोग नहीं डरते थे, वो लोग अपनी रन लेते थे ब्रिंक पर और अपने विंग्स को खोलते थे और फ्लू पास पार्टिसिपल फ्लाई का और उड़ने लगते थे। सो फ्लैप्ड का मतलब क्या होता है, टू मूव इट्स विंग्स अप एंड डाउन व्हेन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई। ठीक है। सो हिज यंगर सिबलिंग्स मैनेज टू टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट मतलब अपनी उड़ान, पहली उड़ान, डिस्पाइट हिज विंग्स बीइंग शॉर्टर दैन हिज। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप courage to take that plunge which appeared to him so desperate। Muster मतलब to gather, failed मतलब हार जाना, और plunge का मतलब क्या होता है इस लाइन में, to jump or to dive। So he could not, he wasn't able to gather the courage though he tried so desperately। डेस्परेटली मतलब बहुत इच्छा से, बहुत मन से उसने ट्राई किया, बट वो अपना करेज गैदर ही नहीं कर पा रहा था और वो बार बार फेल हो रहा था टू गैदर हिज करेज एंड टू टेक अ डाइव। हिज
father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly means a high pitched and piercing voice or sound. चिल्लाने को shrilly बोलते हैं. Upbraiding means to scold. Threatening him to starve on his ledge unless he flew away. Threatening means to give him a warning. And starve means भूखा रहना, starve करना. So he was scolded by his parents for not trying again, but he was so afraid that he could not even move from there. So let's come to the next paragraph. He was 24 hours ago. Since then, nobody have come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So ये जो birds होती हैं seagull, ये fish खाती हैं, तो ये लोग dive करती हैं अपने food के लिए और fish पकड़ती हैं, just like a kingfisher. So he had been alone for a day after he tried, because his parents was busy focusing on his siblings. They helped his siblings to master the art of flying. Flight means flying, अपनी उड़ान लेना. And diving for food. They eat fish, so they dive into the sea and catch the fishes for their dinner. So the next line says, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring means a soft finned sea fish. Herring name होता है एक sea fish का. And devour मतलब to eat quickly. तो उसने even, क्योंकि वो तो डर रहा था, तो उसके पेरेंट्स बिजी थे दूसरे बच्चों को सिखाने में. सो इवन उसने अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने से बड़े ब्रदर को, उसने फ़िश को कैच करते हुए देखा, फर्स्ट फिश, एंड उसको जल्दी जल्दी खाते हुए भी देखा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड cackle. Cackle means to laugh in a loud, harsh way. So his older sibling even caught his first fish, which he proudly ate at a rock while his parents celebrated it. So they were laughing, they were very proud of his son कि उसने अपनी first fish पकड़ी, and they were celebrating it. And the last line says, and all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So that morning his parents taunted him. उसके parents ने उसको taunt किया. Him all the way for being coward. Cowardice means lack of bravery. जिसमें हिम्मत नहीं होती उसको coward बोलते हैं. तो उसको सब उसकी पूरी फैमिली ने उसको they went for a walk about on a big plateau, and they taunted him for being so coward. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye and then the other. So ascending the sky means the act of rising up through the air. जब हम राइज करते हैं एयर के थ्रू, सो द एक्ट ऑफ राइजिंग अप थ्रू द एयर मीन्स असेंडिंग द
sky. So here it means the sun had now risen and he has feeling the heat more than ever because he was empty stomach. So his parents had punished him to be hungry because he couldn't able to fly. So he was feeling even more heat because he was empty stomach. He was hungry since the night before. He stepped out of his ledge and pretended to sleep on one leg to gain the attention of his family, but still no one noticed him. And pretending to be falling asleep, but still took no notice of him. So nobody noticed him. He pretended to fall asleep on one leg to the other, but no one noticed him. He saw his two brothers and his young sister lying on a plateau, dozing with their heads sunk into their neck. His father was preening the feathers of his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. So he saw that his two brothers and sister was lying on the plateau and they were dozing, they were sleeping with their heads sunk in their neck. तो बिल्कुल ऐसे होता है ना कि एक गट्ठी बना के सो जाना, बिल्कुल सब कुछ ऐसे, बिल्कुल जब ठंड लगती है तो कैसे करते हैं, तो बिल्कुल एक गठरी बना के सो जाते हैं. तो वैसे उसके ब्रदर और सिस्टर सो रहे थे. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑफ हिज वाइट बैक. प्रीनिंग मतलब टू क्लीन इट्स फेदर्स. वो अपने फेदर क्लीन कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी मॉम जो थी, शी वॉज लुकिंग एट हिम. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. तो प्लेट्यू का जो एक टीला होता है, एक हम्प होता है, जो एक बल्ज आउट होता है, जो उसके ऊपर खड़े होके शी वॉज लुकिंग एट हिम. हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish and lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So her mother was standing on another plateau and eating fish while she noticed him. And the seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry, and he also loved to tore away fish to scrape his beak now and then. Scrape means to discard. उसको scrap करना, उसको खरोच के उसको निकालना उसे बहुत अच्छा लगता था. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था तो वो पागल हो गया एक तरीके से फ़िश को देखकर. एंड उसकी मॉम उसके सामने फ़िश खा रही थी तो उसको और बुरा लग रहा था. सो that's it for this video. I'll be explaining the other half in the next video. So I expect you to go through the explanation and read the chapter, prepare the word meanings and the difficult words for the chapter.